गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बिबेक डेब्रॉय कमेटी ऑन रेलवे सेफ्टी। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली कुछ रेलवे की सेफ्टी से रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, इसीलिए इस कमेटी के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो कि 2014 में फॉर्म की गई थी। और ये रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए फॉर्म की गई थी कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फाइनेंशियल वायबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस रेलवेज़ की कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो 2015 में इस रिपोर्ट को जो है वो सबमिट किया गया। और उसमें क्या रिकमेंडेशंस थी। पहला तो कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि फील्ड ऑफिसर्स जो कि जैसे जीएम हैं या डीआरएम हैं, उनको ज़्यादा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको पार्शली इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। और एक और रिकमेंडेशन ये थी कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए ताकि फेयर कंपटीशन और प्राइसिंग को रेगुलेट किया जा सके। उसके लिए रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ने 2017 में ही अप्रूव कर दी थी। फिर कहा गया कि लिबरलाइजेशन ज़्यादा करो और प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी पार्टिसिपेट करने दो रेल सर्विसेज में। लेकिन रेलवे यूनियंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑपोजिशन की वजह से गवर्नमेंट ने इसको फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया है। डिसीजन मेकिंग को एक्सपीडिट करने के लिए कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड है उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाओ ताकि फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके पास रहे। 2020 में इस इम्प्लीमेंटेशन को भी रिकमेंड किया जा चुका है। ओके, अब कमेटी ने यह भी सजेस्ट किया कि इंडियन रेलवेज़ को फोकस करना चाहिए अपने कोर फंक्शन पर, जो कि ट्रेन्स को रन करना है। और जो नॉन कोर सर्विसेज है जैसे कि सिक्योरिटी, मेडिकल या एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, उसको आउटसोर्स कर देना चाहिए। फिर एक अकाउंटिंग सिस्टम्स को भी ओवरहॉल करने के लिए कहा गया और कहा गया कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग से जो है शिफ्ट होकर एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग पर जाओ ताकि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आए। और इसको अकाउंटिंग रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने रिकमेंड जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है ऑलरेडी। मिनिस्ट्री ने रेलवेज मिनिस्ट्री ने जो है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष भी जो है 2017 में बनाया, जिसमें 1 लाख करोड़ का फंड है ताकि रिप्लेस, रिन्यू या अपग्रेड किया जा सके क्रिटिकल सेफ्टी एसेट्स को। ओके, कमेटी की रिकमेंडेशन ये भी थी कि इंटीग्रेट की जाए एडवांस टेक्नोलॉजी को ताकि मॉडर्नाइज किया जा सके रेलवे ऑपरेशंस को। और उसके लिए जो है कवच जैसे सिस्टम्स लाना। गति शक्ति विश्वविद्यालय स्किल डेवलपमेंट के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। ओके, तो 19 ऐसी जो है वो रिकमेंडेशन थी जिनको फुली एक्सेप्ट किया गया, 7 को पार्शियली एक्सेप्ट किया गया और 14 रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट किया गया क्योंकि जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ और अपोजिशन जो है कर रही थी, यूनियंस, तो इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बुलडोज़र जस्टिस। ये टॉपिक भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट एवर गाइडलाइंस इशू की हैं आर्बिट्ररी डिमोलिशंस को जो है वो काउंटर करने के लिए और सिटीजन्स को अनजस्ट एक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक तरह से इसमें जो है बुलडोज़र जस्टिस जो कि किया जाता है, मिसयूज़ किया जाता है उसका सिविलाइज सोसाइटी में, उसको एक तरह से काउंटर करने के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। बुलडोज़र जस्टिस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट जस्टिस मैकेनिज्म, जिसमें कि कई तरह की स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं कि जो राइटर्स या फिर प्रोटेस्टर्स हैं उनके घरों को जो है वो बुलडोज़र से रेज डाउन कर दिया जाता है। और ये जो गाइडलाइंस आई हैं, 2019 का एक केस था जिसमें किसी पर्सन की एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया गया था उत्तर प्रदेश द्वारा। अथॉरिटीज़ का कहना था कि एक्सपेंशन की जा रही है नेशनल हाईवे की और कोई रिटर्न नोटिस नहीं सर्व किया गया उस पर्सन को, और डिमोलिशन जो है वो जितना इंक्रोचमेंट एरिया था उससे ज़्यादा एरिया की डिमोलिशन कर दी गई। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी जो है डिमोलिशन को अनजस्टिफाइड बताते हुए कहा कि ओवर अथॉरिटीज़ ने अपने जो है अनक्रोचमेंट एरिया को ओवरस्टेप किया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा लेड बेंच ने कहा है कि आर्बिट्ररी डिमोलिशंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रॉपर्टी को थ्रेटन करती हैं। तो हर तरह की जो डिमोलिशंस हैं वो स्पेसिफिक लीगल स्टेप्स उसमें पहले होने चाहिए फॉलो, तभी वो डिमोलिशन की जा सकती है। तो जो 6 एसेंशियल प्रोसीजर्स बताए गए हैं उसमें पहले कहा गया है कि वेरिफिकेशन करो एग्जिस्टिंग लैंड रिकॉर्ड्स और मैप्स की, प्रॉपर सर्वे किया जाए आइडेंटिफाई करने के लिए एंक्रोचमेंट्स को, रिटर्न नोटिस देना एंक्रोचर्स को, कंसीडरेशन करना कई किसी भी तरह के ऑब्जेक्शंस फॉर्मल ऑर्डर्स के साथ, रीजनेबल टाइम देना उनको कि वो वॉलंटरी खुद ही उसको रिमूव कर दें, और अगर वो नहीं करते हैं तो लीगल एक्विजिशन जो है वो एडिशनल लैंड की जा सकती है। ओके, तो अब इसका वाइडर इम्पैक्ट ये होगा कि
कोर्ट ने कहा है कि डिसिप्लिनरी एक्शन और क्रिमिनल चार्जेस लिए जाएं उन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जिन्होंने उस डिमोलिशन को एग्जीक्यूट करने को कहा था। तो यूपी के चीफ सेक्रेटरी को भी कहा गया है कि 4 महीने के अंदर अंदर ये डिसिप्लिनरी एक्शंस जो है कंक्लूड किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम कंपनसेशन भी अनाउंस की है 25 लाख रुपए पटिशनर के लिए फेवर में। ओके, तो अब इम्प्लीकेशंस इसके क्या हैं? इलीगल इंक्रोचमेंट्स को डील तो करना चाहिए, बट डिमोलिशंस जो है वो लीगल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के बाद ही की जानी चाहिए। तो सभी स्टेट्स और यूटीज़ को ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये एक तरह से रिमाइंडर है कि कंट्री में रूल ऑफ लॉ है और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, और राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया गया है सिटीजन्स के। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। टॉपिक एनवायरनमेंट इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के टाइम पर जो है वो इनाग्रेट किया, एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि सोलर एनर्जी डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट जो है वो वर्ल्ड वाइड की जा सके। तो आईएएस से जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, जिसमें कि अब 110 मेंबर कंट्रीज़ हो चुकी हैं। सोलर एनर्जी जो है वो सेंट्रल है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के, तो उसी के लिए जो है वो सोलर अलायंस बनाया गया था। लेकिन डिप्लॉयमेंट जो है वो अनइवन रही है। चाइना अकेले में ही 43% ऑफ ग्लोबल सोलर कैपेसिटी है और टॉप 10 कंट्रीज़ के पास 95% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ओके, अफ्रीका जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर लगभग सिर्फ 2% ही जो है वो न्यू सोलर एडिशंस देखने को मिले हैं। और 80% जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है वो कंसनट्रेटेड है चाइना में। ओके, तो आईएसए इसलिए बनाया गया था कि कोalition बनाया जाए सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज़ का, जो कंट्रीज़ खासकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं। और इसको जॉइंटली इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था COP21 के टाइम पर, ताकि एक ग्लोबल मार्केट सिस्टम बनाया जा सके बेनिफिट्स ऑफ सोलर पावर और क्लीन एनर्जी एप्लीकेशंस को प्रमोट करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएसए क्या था, क्या है एक्चुअली? कलेक्टिवली एड्रेस करना की कॉमन चैलेंजेस को और फ्यूचर सोलर जनरेशन स्टोरेज और टेक्नोलॉजीज़ लेकर आना मेंबर कंट्रीज़ के लिए। $1000 बिलियन मोबिलाइज करने का इसमें प्लान है बाय 2030। तो इसको डिज़ाइन किया गया था कि एक फैसिलिटेटर बने। ये डायरेक्ट डेवलपर नहीं होता है आईएसए जो है सोलर प्रोजेक्ट्स का, बस कंट्रीज़ को हेल्प करता है कि वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल या रेगुलेटरी बैरियर्स को ओवरकम कर सकें। ठीक है, लेकिन ये देखने को मिला है कि 9 साल बाद भी आईएसए का जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड रहा है। कोई भी ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स अभी तक इसके नहीं हैं। इनफैक्ट जो इसका पहला प्रोजेक्ट था 60 मेगावाट का क्यूबा में, वो अभी भी डेवलपमेंट स्टेजेस में है। तो रैपिड ग्रोथ होने के बावजूद भी एवरेज 20% एनुअल इंक्रीज़ इन कैपेसिटी देखने को मिली है पिछले 5 साल में। 30% राइज 2023 में ही देखने को मिला है। फिर भी आईएसए जो है वो अपनी ब्रॉड डिप्लॉयमेंट नहीं कर पा रहा है। ओवर 80% जो सोलर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अभी भी डेवलप्ड नेशंस में ही कॉन्ट्रीब्यूट जो है कंसनट्रेटेड है। आईएसए का जो फोकस है वो सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है स्मॉल डेवलपिंग नेशंस में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक स्टेबल पॉलिसीज़ और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं, जो कि आईएसए को हेल्प करना चाहिए गवर्नमेंट्स और लोकल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर। आईएसए का एम है 1000 गीगावाट्स ऑफ सोलर पावर और $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट लेकर आना बाय 2030। तो इंडिया का इसमें लीडरशिप रोल है। इंडिया जो है वो, इसको कहा जाता है कि आईएसए जो है ये इंडिया का ही इनिशिएटिव है, क्योंकि इसका इंडिया में हेडक्वार्टर है। इंडियन फंडिंग से ही बनाया गया है, इंडियन लीडरशिप ही के इनिशिएटिव पर ही ये शुरू किया गया। ओके, और ये इंडियन लीडरशिप जो है वो कम से कम 2026 तक इसमें लीड करेगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2025। ये टॉपिक भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है लगभग टोटल 163 यूनिवर्सिटीज़ के साथ मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री बनकर सामने आया है 16th एडिशन ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। तो ये जो रैंकिंग्स हैं एशिया 2025, ये हर साल 2009 से पब्लिश की जाती है क्वाक्वारली स्टाइमंड द्वारा। टॉप यूनिवर्सिटीज़ को एशिया में रैंक किया जाता है हर साल। इसमें 11 इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इस रैंकिंग्स के लिए। तो अगर हम हाइलाइट्स देखें तो 984 इंस्टीट्यूशंस जो लगभग 25 कंट्रीज़ के जो है इसमें असेस किए गए हैं, ईस्टर्न, सदर्न, साउथ ईस्टर्न और सेंट्रल एशिया के। पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि बीजिंग में है वो टॉप पर आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग सेकंड पर है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर थर्ड पर है। 44th रैंक पर जो है इंडिया का आईआईटी दिल्ली है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। ये टॉपिक भी आपके जो है
साइंस एंड टेक के लिए और इन्वायरमेंट दोनों के सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली बेंगलुरु का फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेट किया गया है एट इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज। तो ये रियल टाइम एस्टिमेट्स देगा कर्नाटका और इंडिया की पॉपुलेशन के। तो ये जॉइंटली प्रोजेक्ट है, बनाया गया है ISEC और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो ये अपडेट करेगा स्टेट की पॉपुलेशन हर 1.10 मिनट्स में और कंट्री की पॉपुलेशन हर 2 सेकेंड में। ओके, तो इसका एम ये है कि ये अवेयरनेस जनरेट करे पॉपुलेशन डायनामिक्स पर। इसको सैटेलाइट कनेक्शन के साथ इक्विप किया गया है ताकि प्रिसाइज टाइम कीपिंग की जा सके। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सागरमाला परिक्रमा। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो रिसेंटली एक ऑटोनॉमस सरफेस वेसल जो है वो उसने 1500 किलोमीटर की वोयाज कंप्लीट की है मुंबई से थूथुकुडी तक बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। तो ये जो सागरमाला परिक्रमा है ये सपोर्ट किया गया है इंडियन नेवी के नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल और इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस के द्वारा। ओके, तो सागरमाला परिक्रमा जो है वो ग्लोबल एडवांसमेंट्स को के साथ अलाइन कर रही है ऑटोनॉमस सरफेस एंड अंडर वाटर सिस्टम्स के साथ। ओके, तो इसमें जो होगा क्या कि इससे फ्यूचर डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑटोनॉमस वेसल्स जो है वो हेल्प होगा, खासकर क्रिटिकल सी लेन्स, कोस्टल सर्वेलेंस या एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में। तो उसके लिए जो नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये एक 3 टेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी और ये ऑफ कोर्स इसमें हेल्प कर रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं INS विक्रांत। ये टॉपिक भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इंडियन नेवी की डिमॉन्स्ट्रेशन देखी है INS विक्रांत पर, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिज़ाइंड और मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसको डिज़ाइन किया गया है इन हाउस इंडियन नेवी के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा। कंस्ट्रक्ट किया गया है मैसर्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इंडिया ने ग्रुप ऑफ एलीट नेशंस को भी ज्वाइन किया है इसके बाद, इसके बनने के बाद US, रशिया, फ्रांस, UK और चाइना को, जो अपने आप डिज़ाइन कर सकते हैं और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स को। इसका जो फुल लोड डिस्प्लेसमेंट है वो 43,000 टन्स है। एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी जो है वो मतलब 30 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को ये अकोमोडेट कर सकता है। और स्टोबार मेथड का मतलब शॉर्ट टेक ऑफ और बट अरेस्टेड रिकवरी मेथड का इस्तेमाल करता है ये लॉन्च और रिकवर करने के लिए एयरक्राफ्ट्स को। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो 3rd एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद का वो फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे में शुरू हो चुका है महाराष्ट्र में। और ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में की जाती है ऑल्टरनेटिवली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो लास्ट टाइम जो है ये दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की गई थी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सी प्लेन। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केरला की टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है वो सी प्लेन सर्विसेज जो है वो लॉन्च करने वाली है ताकि टूरिज्म सेक्टर को प्रमोशन हो सके कोची में। तो ये सी प्लेन कोई भी क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट होता है जो कि लैंड, फ्लोट और टेक ऑफ हो सकता है वाटर से। फिक्स्ड विंग एरोप्लेन होता है ये, टेकिंग ऑफ और लैंडिंग ऑन वाटर कर सकता है। फ्लोट प्लेन जो है सबसे कॉमन होते हैं टाइप ऑफ सी प्लेन ये। और फ्लाइंग बोट्स भी होती हैं। फ्लाइंग बोट्स में मतलब क्या होता है कि हल जो है वो इंटायरली डिज़ाइन किया जाता है कि वो फ्लोट कर सके वाटर के ऊपर। ओके, एडवांटेजेस क्या हैं कि ये फ्लाई कर सकता है लो और इसको बोथ लैंड और सी दोनों का एक्सेस रहता है। तो इसको हम खासकर बॉर्डर कंट्रोल इन्वेस्टिगेशंस या फिर वेदर एनॉमलीज की इन्वेस्टिगेशंस में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओसोवॉग इनिशिएटिव, एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो एडवांस डिस्कशंस में है UAE, ओमान, सऊदी अरेबिया, मालदीव्स और सिंगापुर के साथ कि एक क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस बनाई जा सकें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव के लिए। तो जो ये इनिशिएटिव है ये PM मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फर्स्ट असेंबली जो कि 2018 में हुई थी उसमें जो है इसको प्रपोज किया था। तो इसमें इनिशिएटिव में क्या है कि एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाया जाए ताकि पावर को वर्ल्ड वाइड सप्लाई किया जा सके। तो UK और इंडिया ने मिलकर इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ पार्टनरशिप करके और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके इसको स्पेयरहेड किया है। तो इसमें होगा क्या कि डिफरेंट जो रीजनल ग्रिड्स हैं उनको एक कॉमन ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाएगा ताकि जो रीन्यूएबल एनर्जी पावर है उसको ट्रांसफ़र किया जा सके एक दूसरे के एरियाज़ में। ताकि होगा क्या कि सन जो है वो कहीं ना कहीं तो शाइन कर ही रहा होता है वर्ल्ड में किसी ना किसी टाइम पर। तो उस सोलर एनर्जी को जो है वो
यूज हार्नेस किया जाएगा और बाकी फॉर्म्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी हार्नेस किया जाएगा और उसको वर्ल्ड में जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो 140 कंट्रीज़ जो हैं वो एक कॉमन ग्रिड के थ्रू कनेक्टेड होंगी। पहले फेज़ में इंडियन ग्रिड को कनेक्ट किया जाएगा मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ। सेकेंड फेज़ में अफ्रीका के साथ कनेक्ट किया जाएगा। थर्ड फेज़ में जो है इंटरकनेक्शन की जाएगी बाय 2050। ओके, और 2600 गीगावाट्स का जो है वो ये पूरा प्रोजेक्ट ग्लोबल इंटरकनेक्शन तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Bibek de Broy Committee on Railway Safety. This topic is important for your governance section. So due to the recent railway incidents, the Bibek de Broy Committee, which was formed in 2014, has been in news. So this committee was aimed to suggest comprehensive reforms for the Indian Railways to improve operational efficiency, financial viability, and competitiveness. And this committee published its landmark report in 2015. Okay, and it proposed extensive changes to transform Indian Railways. So this committee emphasized empowering field officers, including the GMs and DRMs, by granting them greater decision-making powers. Okay, so government has partially implemented this reform, and there was also another major recommendation, which was to set up an independent regulatory body. So the government had already approved it in 2017 with the Railway Development Authority. Then the committee also recommended liberalization so as to allow private operators to participate in rail services. But due to the opposition from railway unions and political parties, government has not fully implemented this recommendation. Okay, so the committee said that to expedite decision making, committee recommended designating the chairman of railway board as the chief executive officer with final decision making authority. So this recommendation was implemented in 2020. The committee also suggested that Indian Railways should focus on its core functions of running trains while outsourcing the non-core services like the security, medical, and educational facilities for employees. Okay, so the committee also recommended overhaul of the accounting system and to shift from cash-based accounting to accrual-based accounting, enhancing financial transparency. And this recommendation was also implemented through an accounting reforms project. Okay, so the committee also recommended the creation of Rashtriya Rail Sanraksha Kosh in 2017 with a fund of 1 lakh crore rupees for replacing, renewing, and upgrading critical safety assets. And the government has also extended this fund with additional 45,000 crore in budgetary support in the last 1 or 2 years. The committee also recommended integrating advanced technology to modernize railway operations. For that, the government is also already implementing Kavach and also established the Gati Shakti Vishwavidyalaya for skill development and capacity building in rail technology. Okay. So if we look at the implementation status, then 19 recommendations were fully accepted, 7 were partially accepted, and 14 were rejected due to opposition from unions or political parties. So the next topic is bulldozer justice. This topic is important for your governance section. Supreme Court has established first ever guidelines to counter arbitrary demolitions so as to protect citizens from unjust actions of the state authorities. So this ruling has highlighted the misuse of bulldozer justice in a civilized society. What is bulldozer justice? Basically, it's an instant justice mechanism which is propagated by several state governments so as to punish the alleged rioters and protesters by raising down their houses, stalls, or any construction with the use of JCB, okay, or bulldozers. So these guidelines have come from a 2019 case in which a journalist's ancestral property was demolished in Uttar Pradesh, and the authorities cited expansion of a national highway as the reason for the same, but the court found multiple violations. So about no written notice was served to the petitioner, and the demolition exceeded the alleged encroachment area as well. Even the National Human Rights Commission found the demolition unjustified, and it said that authorities overstepped the encroachment area. So, what are the key highlights of this ruling? So, the CJI underscored that the arbitrary demolitions threaten the constitutional right to property. So, all demolitions must be preceded by specific legal steps. So, therefore, 6 essential procedures have been outlined by Supreme Court.
First is that you have to verify the existing land records and maps. Then proper surveys need to be done to identify encroachments. Written notices must be given to encroachers. Consideration of objections should also be there with formal orders, and these encroachers should be given reasonable time so that they can voluntarily remove those encroachments. But in case it does not happen, then only legal acquisition of additional land can be done. Okay. So, court has ordered disciplinary action and criminal charges against those officials in the journalist demolition case, and UPA Chief Secretary has been instructed to conclude disciplinary actions within 4 months against them. And Supreme Court has also directed interim compensation of 25 lakh to petitioner. Okay. So the court has clarified that while illegal encroachments must be dealt with strictly, demolitions must strictly adhere to legal standards. Okay, so the court has directed that all states and UTs need to implement these guidelines. So this is a critical reminder for the rule of law in India. Okay. So the next topic is International Solar Alliance. This topic is important for your environment and economy section. So India alongside France had established the International Solar Alliance at the 2015 Paris Climate Conference to promote solar energy deployment. So ISA has grown since then into an intergovernmental organization with over 110 member countries. So solar energy is central to the global energy transition, which is needed to combat climate change. But the deployment of solar energy is uneven. For example, China alone accounts for 43% of global solar capacity, and the top 10 countries hold over 95% of such installations. Africa, which is home to 745 million people without electricity, sees less than 2% of new solar additions. So, additionally, over 80% of the solar manufacturing is concentrated in China, and therefore, ISA was conceived as a coalition of solar resource rich countries, especially those which completely or partially lie between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. And this project was jointly launched by India and France at the sidelines of COP21, and it is working to create a global market system to tap the benefits of solar power and promote clean energy applications. Okay. So the objective of ISA is to collectively address key common challenges to the scaling up of solar energy in line with their needs. To meet this objective, it aims to pave the way for future solar generation, storage, and technologies for member countries, which is and it also needs to mobilize over 1,000 billion dollars by 2030. So ISA was designed to be a facilitator rather than a direct developer of solar projects, and it is basically aimed to help countries to address their financial, technological, and regulatory barriers. So even after 9 years of its inception, ISA has seen limited impact. In fact, the first ISA supported project, which is a 60 megawatt plant in Cuba, is still in development stages. This is happening despite the fact that 20% annual increase in capacity over the past 5 years has been seen in ISA, with a 30% rise in 2023 alone. Still, ISA has struggled to facilitate broad deployment. Over 80% of the solar investments are concentrated in developed nations. Okay, so ISA has been focusing on addressing significant entry barriers in smaller developing nations. Foreign investments require stable policies and regulatory frameworks, which ISA is helping to establish by working with governments and local institutions. ISA also aims to deploy 1,000 gigawatt of solar power and attract $1 trillion in investment by 2030. So ISA is seeing India's leadership role because it is largely seen as an Indian initiative due to its headquarters, Indian funding, and Indian leadership of its General Assembly, which will continue until at least 2026. So the next topic is QS World University Rankings 2000 Asia 2025. This topic is important for your governance section. So India, with a total of 163 universities, has been ranked as the most represented country in the recently released 16th edition of the World University Rankings Asia by Quacquarelli Simons. So this is published annually since 2009 by Quacquarelli Simons, and it highlights the top universities in Asia each year. 11 indicators are used to compile the QS Asia University rankings. So these rankings have assessed 984 institutions covering about
25 countries in Eastern, Southern, Southeastern, and Central Asia. Peking University retains the top spot, which is in Beijing, of course, and the University of Hong Kong is the second, and National University of Singapore is confirmed in third. So IIT Delhi is leading at the 44th place. Okay. So the next topic is digital population clock. This topic is important for your science and tech and your social issues section. So Bengaluru's first digital population clock was inaugurated at the Institute for Social Economic Change, ISEC. So this will access real-time estimates of Karnataka's and population of India. So this project was jointly undertaken by ISEC and the Union Health Ministry. This would update the figures of states' population every 1.10 minutes and the country's population every 2 seconds. The aim is to increase awareness of population dynamics, and this clock has been equipped with a satellite connection also for precise timekeeping. And this would strengthen academic research, policy analysis, and capacity building in population studies. Okay. So the next topic is Sagarmala Parikrama. This topic is important for your security section. So recently, an autonomous surface vessel has completed a 1500-kilometer voyage from Mumbai to Thoothukudi without human intervention. So it is Sagarmala Parikrama was virtually flagged off by the Indian Defence Minister during the Swavlamban event on October 29. It is supported by Indian Navy's Naval Innovation and Indigenization Organization, Technology Development Acceleration Cell, and the Innovations for Defense Excellence. The Sagar Parikrama aligns with global advancements in autonomous surface and underwater systems. So it paves the way for future deployment of autonomous vessels in critical lanes, coastal surveillance, and anti-piracy operations as well. Okay, so what is Naval Innovation and Indigenous Organization? It's a three-tiered organization which has been launched by the Defense Ministry. Okay. So the next topic is INS Vikrant. This topic is again important for your security section. So President of India has witnessed the Indian Navy's demonstration of INS Vikrant, and INS Vikrant is India's first indigenously designed and manufactured aircraft carrier. It has been designed in-house by the Indian Navy's Warship Design Bureau, and it is constructed by Messrs. Cochin Shipyard Limited. India has joined the elite group of nations with like the US, Russia, France, UK, and China, who are capable of designing and constructing their own aircraft carriers. So, INS Vikrant has a full load displacement of about 43,000 tons. Its endurance is about 13,890 kilometers. It can accommodate up to 30 fixed wing aircraft. It uses STOBAR technique or the STOBAR method, which is basically short takeoff but arrested recovery method to launch and recover aircraft, for which it is equipped with a sky jump launch aircraft and three arrestor wires for the recovery. Okay. So the next topic is Exercise Austro-Hind. This topic is important for your security section. So third edition of Joint Military Exercise Austro-Hind has commenced at the Foreign Training Node Pune in Maharashtra. So this exercise is a joint military exercise between India and Australia, and it is conducted alternatively annually and also annually between India and Australia. The last one was conducted in Australia in 2023. So the next topic is seaplane. This topic is important for your economy section. So Kerala Tourism is launching a seaplane service meant to boost the tourism sector at Kochi. So seaplane is any class of aircraft which can land, float, or take off on water. It's a fixed wing aeroplane designed for taking off and landing on water. It offers the public the speed of an aeroplane with the utility of a boat. So types of seaplane include float planes. Float planes are the most common type of seaplane. Flying boats are amphibious seaplanes and float planes. Basically, flying boats have their hull entirely designed to float on water. So, what are the advantages of seaplanes? They can fly low and they can have access to both land and sea. They can observe coastal activities such as border control, investigations, or weather anomalies. So the next topic is OSOWOG initiative. This topic is important for your environment section. So India is in advanced discussions with Oman, UAE, Saudi Arabia, Maldives, and Singapore to establish cross-border electricity transmission lines as part of the ambitious One Sun, One World, One Grid initiative. So OSOWOG initiative was put forth by Prime Minister Modi at the International Solar Alliance First Assembly in October 2018, and the initiative aims to introduce a transnational electricity grid which would supply power worldwide.
So this project has been spearheaded by the governments of India and UK in partnership with ISA and World Bank. The aim is to connect different regional grids through a common grid that will be used to transfer renewable energy power and thus realize the potential of renewable energy sources. The idea is to harness solar and other renewable energy sources from different parts of the world where the sun is shining at any given moment and efficiently transmit that power to areas where it is needed. Okay, so OSOWOG aims to provide power to about 140 countries through a common grid, which would ensure that transfer of clean and efficient solar power. So OSOWOG initiative is to be carried out in three phases. In the first phase, the Indian grid would be connected to the grids of Middle East, South Asia, and Southeast Asia to develop a common grid. The second phase would connect the functional first phase to the pool of renewable resources in Africa. The third phase would look at achieving true global interconnection with the aim of 2600 gigawatt of interconnection by 2050. Okay, so the goal will be to integrate as many countries as possible so as to create a single power grid of renewable energy which can then be accessed by all countries. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.